Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine. Today we are going to start our unit 10 named The Sun and the Stars. So, what are the stars? Let's define it. Stars are actually the big balls of burning gases, right? Stars are great clouds of gas and dust particles which are packed tightly together. They heat up and begin to shine. Okay? If you look up at the sky on a clear moonless night, you will see thousands of stars. If you gaze for a while, you will notice that some of the bright stars could be joined up to make patterns in the sky, right? So, what did it mean? First of all, keep this thing in your mind that because the stars they are made up of hot and burning gases and dust particles, so those hot and burning gases they are the reason for the stars to shine. ठीक है, जो stars होते हैं वो shine इसलिए करते हैं क्योंकि हॉट एंड बर्निंग गैसेस से वो मिलकर बने होते हैं. ठीक है, और वो कॉन्टीन्यूसली उनके अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हीट भी इमिट हो रही होती है, लाइट भी इमिट हो रही होती है. ठीक है, इसलिए हमें स्टार्स ब्राइट नज़र आते हैं, राइट. एंड सन इज़ ऑल्सो अ स्टार. ओके, तो यहाँ पर एक आपने चीज़ ऑब्जर्व करनी है. ठीक है, रात के टाइम पर आपने एक ओपन जगह पर खड़े होना है. ठीक है, और आपने ऊपर आसमान पे कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है. जिस तरह से आपकी बुक में ये पैटर्न्स है ना, इन पैटर्न्स को आपने स्काई पे ट्रेस करना है. इट्स योर एक्टिविटी, राइट. इस तरह का एक पैटर्न है. दिस पैटर्न इज़ नॉन एज द ग्रेट बियर, राइट. और एक आपको पैटर्न नज़र आएगा लिटिल बियर का पैटर्न, दिस पैटर्न, राइट. ये दीज आर वेरी इजी टू ट्रेस ऑन द स्काई. ठीक है, और आप ट्राई करें कि आपने अगर आपको एक दिन नज़र नहीं आता तो आप नेक्स्ट डे अगेन ट्राई करें, नेक्स्ट डे अगेन ट्राई करें, बट यू हैव टू फाइंड दीज पैटर्न्स बाय योर सेल्फ. ठीक है, ये दीज आर नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट टू फाइंड. ठीक है, बिकॉज ये जो स्टार्स होते हैं ना, ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं इन इसी पैटर्न पे बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं. बस ये जो लाइंस है ना, ये नहीं होंगी. जस्ट एक स्टार यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक स्टार यहाँ पर देन दिस एंड दिस. इस तरह का पैटर्न होगा स्काई पे. एंड दिस पैटर्न इज़ वेरी वेरी इजी टू ट्रेस ऑन द स्काई बिकॉज ऑल ऑफ दीज स्टार्स दे आर वेरी ब्राइट स्टार्स. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ दी स्टार्स. ठीक है, तो इनको आप इजीली ट्रेस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपने ट्रेस करना है और फिर आपने मुझे बताना है क्लास में कि कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये पैटर्न्स मिल गए हैं. ओके, और इस तरह के बहुत सारे पैटर्न्स जो है ना, ये आपकी बुक में जस्ट 2 पैटर्न्स डिफाइन हुए हैं. ठीक है, बहुत सारे पैटर्न्स के बहुत सारे नेम्स हैं. ठीक है, तो बट दीज 2 पैटर्न्स आर इजी टू फाइंड. दैट्स वाई इट्स योर एक्टिविटी टू फाइंड दीज पैटर्न्स. ओके, here are some interesting facts about sun. Okay, so first of all, sun is a star. It is very small star. Many stars are bigger than sun. Sun looks big because it is nearer to us. It is 150 million kilometers away from the earth. Okay, sometimes we can see dark patches on the surface of sun. These are called sunspots. The sun gives us heat and light. Plants use sunlight to make their food. Sunlight helps our skin to make vitamin D. Okay. So students, just like the other stars, the sun is also made up of hot and burning gases. This is the reason that sun is also a star. Okay. But are you aware that sun is very very small star as compared to rest of the stars? Like जो stars आपको sky पे नज़र आते हैं बहुत छोटे छोटे से टाइनी से, उनसे sun छोटा है साइज़ में, right? Sun is smaller in size as compared to many of the stars, right? तो ऐसा क्यों है? वो स्टार्स तो हमें ज़्यादा छोटे नज़र आते हैं और सन हमें इतना बड़ा नज़र आता है, मून से भी बड़ा नज़र आता है. तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? सन हमें क्यों इतना बड़ा नज़र आता है और बाकी स्टार्स इतने बड़े हैं अगर वो सन से, तो हमें क्यों स्मॉल नज़र आते हैं, इतने टाइनी से क्यों नज़र आते हैं?
The reason is actually the distance between Earth and the Sun and Earth and the rest of the stars, right? Okay, the sun looks big because it is nearer to us, right? जो sun है वो अर्थ से ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टार्स, ठीक है? जो बाकी स्टार्स हैं वो सन से दूर हैं, इसलिए वो हमें बहुत टाइनी नज़र आते हैं, छोटे से नज़र आते हैं, जबकि जो सन है, सन इज़ नियर टू द अर्थ. दिस इज़ द रीज़न दैट इट अपीयर्स बिगर टू अस, राइट? एंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन? It is 150 million kilometers, right? And then one more important thing about the sun is appearance of the dark patches, right? Let's suppose that this is the sun, ठीक है? अब सनलाइट को जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने एक जगह पे फोकस किया ना जब, तो उन्हें कुछ जो एरियाज है ना इस तरह से यूँ ब्लैक से नज़र आए, just like this and this and this, right? Those scientists, they said that these dark areas on the sun, these are known as sunspots, right? These dark patches on the sun is known as sunspot. These are known as sunspots, okay? Then are the uses of the sun, how the sun is important for us. The sun, first of all, it is the main source of heat and light on the earth. Then the plants use sunlight to make their food by the process of photosynthesis that you already know. Sunlight helps our skin to make a vitamin, and that is vitamin D. That is very important, very, very important for our health. Okay, for our bones. Okay. Then here is a plant makes its food in sunlight. By which process? By the process called photosynthesis. Okay, photo means light. Okay, and this light is actually the sunlight. Okay, got the concept? Next is the heat of the sun helps to make wind and rain. The earth would be very dark and cold without the sun. Nothing would be able to live on the earth. Okay, so these are some important facts about the sun. That first of all, here you can see the figure. Within the figure, the figure, it's completed in 3 steps. A is hot air rises. Hot air rises on here you can see that it's a sunny day, right? And the air become hot, and the hot air it start to rise up. ठीक है, जब एयर गर्म हो जाती है तो वो लाइट इन वेट हो जाती है, तो वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है. ओके, देन इट ब्लोज टूवर्ड दी सी. ओके, फिर वो जो एयर है ना वो सी की तरफ, वो पहले ऊपर राइज करती है, राइज करने के बाद फिर वो सी की तरफ ब्लो करती है. ओके, देन यहाँ पर जो सी की सरफेस है ना वहाँ से वाटर वेपर्स को कलेक्ट करती है ये एयर, और फिर ये कूल एयर हो जाती है. ठीक है, द एयर इट गॉट कोल्ड. ओके, एंड देन ये जो एयर है इसने तो मूव करना है ना. ठीक है, एयर इज़ ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन फ्रॉम वन टू द अदर प्लेस. ओके, तो जब ये एयर यहाँ से कूल हो जाती है, कूल होने के बाद अगेन ये लैंड पे जाएगी, तो दिस एयर इज़ नॉन एज, जो सी से लैंड की तरफ जाती है, दिस एयर इज़ नॉन एज द सी ब्रीज. ओके, and last and important thing that if there would be no sun, what would happen? Hurry up, do tell me. Yes, because sun is the main source of heat and light. That's why if there would be no sun, then the earth, it would be very, very dark and very cold without the sun. Okay, and nothing would be able to live on the earth, because we are aware that
The plants, they are the major source of food. Okay, and the plants, they make food in the presence of sunlight. Okay, और जब कोई सनलाइट होती ही नहीं अगर अर्थ पे, तो प्लांट्स फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते. ठीक है, प्लांट्स को एनिमल्स ईट करते हैं, फिर एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं कर सकते. हम प्लांट्स से भी फूड ऑब्टेन करते हैं, एनिमल्स से भी फूड ऑब्टेन करते हैं. जब प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव नहीं करते तो फिर हम भी सर्वाइव नहीं कर सकते थे. राइट, तो विदाउट सन देयर वुड बी नो लाइफ. Okay, so this was all about the sun. If you have any question, you can ask during the online classes. Thank you.